Okay, class. Assalamu alaikum. Let's continue from where we left off last time. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू फॉरेन सब्सिडरी, इसको हमने डिस्कस किया था कि जैसे इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट आइडेंटिफाई की, क्योंकि आप बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट करते हुए यू हैव टू कंसिडर दिस कि हमें जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर से रिटर्न किस तरह से मिल जाएगा, हमें उतना रिटर्न मिले भी सही, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें व्हेन यू रोल बैक तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा। सो उन्होंने सबसे बड़ी मार्केट ढूंढी एशिया के अंदर जहां से वो स्टार्ट कर सकते, वो इंडिया की मार्केट थी। देयर वाज अ लॉट ऑफ बायर्स अवेलेबल, तो उन्होंने वहां से स्टार्ट कर दिए अपने ऑपरेशंस टू एस्टेब्लिश अ न्यू फॉरेन सब्सिडरीज। तो अमेजन ने यहाँ स्टार्ट किया है, ये एक इजी आपको एग्जांपल मिल गई है व्हाट सब फॉरेन सब्सिडरी इज। इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सब्सिडरीज हो सकती हैं। Firms can also penetrate foreign markets by establishing new operations in foreign countries to produce and sell their products. Like a foreign acquisition, this method requires a large direct foreign investment. Establishing a new subsidiary may be preferred to foreign acquisitions because the operations can be tailored exactly to the firm's needs. In addition, a smaller investment may be required than would be needed to purchase existing operations. However, the firm will not reap any rewards from the investment until the subsidiary is built and a consumer base established. सो अगेन डेफिनेटली आप एक तो टेलर बिल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से उसको, क्योंकि आपको किसी और का सेटअप परचेज नहीं करना। दूसरा, फिर वो उसका जो सेटअप परचेज करने की एडिशनल कॉस्ट है वो आपको नहीं पड़ेगी, उसका नेम और सारा कुछ। लेकिन इस केस के अंदर आपको ये नहीं है कि जाते ही सेल्स मिल जाएगी, कस्टमर बेस मिल जाएगी। जब पहले वो आपको जाके अपनी फैसिलिटीज बिल्ड करनी है, एक लंबा टाइम उसके लिए दरकार है। और उसके बाद यू हैव टू एक्चुअली एस्टेब्लिश योर कस्टमर बेस एज वेल। मार्केटिंग करनी है, बहुत सारी चीजें और करनी है, तो एक पूरा नया बिजनेस सेटअप करने के बराबर हो जाता है ये। The summary, the methods of increasing international business extended from the relatively simple approach of international trade to the more complex approach of acquiring foreign firms or establishing a new subsidiary. International trade and licensing are usually not viewed as examples of direct foreign investment because they do not involve direct investment in foreign operations. Franchising and joint ventures tend to require some investment in foreign operations, but only to a limited degree. Foreign acquisitions and the establishment of a new foreign subsidiary requires substantial investment in foreign operations and account for the largest portion of foreign direct investments. Many MNCs use a combination of methods to increase international business. For example, IBM and PepsiCo engage in substantial direct foreign investments, yet also derive some of their foreign revenue from various licensing agreements, which require less foreign direct investment to generate revenue. तो हाँ, आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी, किसी कंट्री में कोई, किसी कंट्री में कोई, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंट्री, द मार्केट, आप उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एमएनसी की कैश फ्लो डायग्राम आप देख सकते हैं। ओके, कैश इनफ्लो फ्रॉम एक्सपोर्टिंग, तो फॉरेन जो इंपोर्टर्स होते हैं वो आपको जो पेमेंट देते हैं उसकी वो आपके पास आ जाती है। और कैश आउटफ्लो टू पे फॉर इंपोर्टिंग, कोई चीज अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सपोर्टर को दे रहे हैं, तो उसकी इंपोर्टिंग के लिए जो पेमेंट करते हैं वो उसके थ्रू आप कर रहे होते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली जहां आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये उस केस के अंदर है कि आप जो है कहीं से इंपोर्ट करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, कहीं पर एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से कैश का इनफ्लो होगा। देन लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग जॉइंट वेंचर स्पेशली बाय एमएनसी जब आप कर रहे होते हैं, तो फिर अगेन फॉरेन फर्म जो होती है, गवर्नमेंट एजेंसी या फॉरेन फर्म, उसके थ्रू आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही होती है। और इस तरह से इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सब्सिडरी, जो कि आप जाकर सब्सिडरी सेटअप करें तो वहां आपकी फॉरेन सब्सिडरी, और वहीं से आपके पास कैश की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही थी, सामान की और कैश की। नाउ वैल्यूएशन मेथड फॉर एन एमएनसी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप एक एमएनसी को वैल्यू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यू नीड टू नो कि हाउ मच इज इट वर्थ, बिकॉज फाइनेंस के अंदर हमारा बेसिक क्वेश्चन हर चीज के बारे में ये होगा कि व्हाट इट्स वैल्यू, हाउ मच, हाउ डू यू प्राइस समथिंग, किसी चीज की वैल्यू क्या है, किसी चीज की प्राइस क्या है, क्या कीमत है उसकी। The value of an MNC is relevant to its shareholders and its debt holders. When managers make decisions that maximize the firm's value, they also maximize shareholders' wealth. Assuming that the decisions are not intended to maximize the wealth of debit holders at the expense of shareholders. Given that international financial management should be conducted with the goal of increasing the MNC's value, it is useful to review some basics of the valuation. There are numerous methods to value an MNC. Some of them lead to the same valuation. The method described in this section reflect the key factors affecting the MNC's value in a general sense.
सबसे पहला मेथड है डोमेस्टिक मॉडल. Before modeling an MNC's value, consider the valuation of a purely domestic firm in the United States that does not engage in any foreign transactions. The value of the purely domestic firm is commonly specified as the present value of its expected dollar cash flows. ठीक है, कि जो कॉमन उसकी वैल्यूएशन की जाती है, जो डोमेस्टिक फॉर्म के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक्सपेक्टेड जो कैश फ्लोज हैं फ्यूचर के, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लेंगे तो वो आपकी कंपनी की वैल्यू बन जाती है. बिकॉज कंपनी इज ओनली वर्थ द एसेट्स इट हैज, एंड अगेन इसके अंदर भी स्पेशली द पोटेंशियल फ्यूचर कैश फ्लोज जो वो जनरेट कर सकती है. ठीक है, तो जो पोटेंशियल फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनकी अगर हम आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें कि फ्यूचर में ये कितने कैश फ्लोज, वो उस कंपनी की एक्चुअल वर्थ है, उसकी वैल्यू है. तो ये जो ऊपर ECF है ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज आ रहे हैं आपके पास, और नीचे जो ये प्लस प्लस के है ये उसका डिस्काउंटिंग की जा रही है ताकि प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा सके. जो डॉलर कैश फ्लोज जो है ये आपके पास ये आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉलर कैश फ्लोज. तो ये एक्सपेक्टेड डॉलर कैश फ्लो इन पीरियड टी, जो जो टाइम पीरियड टी डिसाइड किया गया है, रिप्रेजेंट्स फंड्स रिसीव्ड बाय द फर्म माइनस फंड्स नीडेड टू पे एक्सपेंसेस और टैक्सेस और टू री इन्वेस्ट इन द फर्म. तो जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं, टैक्सेस हैं, री इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, उसको निकालने के बाद जो बच जाते हैं फंड्स जो कंपनी रिसीव करती है, दैट इज द डॉलर कैश फ्लोज. और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपके पास ये 1 प्लस के आ रहा है, के जो है ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के इन द डिनोमिनेटर ऑफ द वैल्यूएशन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब हम आ जाते हैं मल्टीनेशनल मॉडल के ऊपर कि मल्टीनेशनल मॉडल के अंदर क्या होगा. एन MNC's value can be specified in the same manner as a purely domestic firm's value. However, consider that the expected cash flow generated by a US based MNC's parent in period T may be coming from various countries and may be denominated in different foreign currencies. The foreign currency cash flows will be converted into dollars. Thus, the expected dollar cash flows to be received at the end of period T are equal to the sum of the products of cash flows denominated in each currency. J multiplied by the expected exchange rate at which currency J could be converted into dollar cash flow by MNC in the end. ठीक है, एक्सपेक्टेड अगेन आप बेसिकली एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ले लेते हैं. अब उसको क्योंकि कैश फ्लो जो है वो हो सकता है जे करेंसी के अंदर है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो एक्सपेक्टेड उसका एक्सचेंज रेट होगा उसके साथ, ताकि आपके वो वैल्यू जो है वो आपकी डॉलर्स के अंदर, जैसे ये यूएस के अंदर एग्जांपल है कन्वर्ट हो रहा है, तो हम पाकिस्तानी रुपये में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो भी करेंसी है, लेट्स सपोज डॉलर्स में है, तो हम उसको फिर डॉलर के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी कि उस करेंसी की वैल्यू हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या है. सिमिलरली इसमें ये भी हो सकता है कि हाउ डू यू वैल्यू एन एमएनसी दैट यूजेस टू करेंसीज. अब इस केस के अंदर आप सेपरेटली दोनों की वैल्यूएशन कर सकते हैं. ठीक है, an MNC that does business in two countries could measure its expected dollar cash flows in any period by multiplying the expected cash flow in each currency by the expected exchange rate at which that currency could be converted to dollars and then summing those two products. ठीक है, कि बस अब दोनों की सेपरेटली कैलकुलेशन कर लेंगे, जो उसकी एक्सपेक्टेड डॉलर रेट है उस जो उसका एक्सपेक्टेड करेंसी रेट है उसके साथ, और दोनों को ऐड कर लेंगे. Now, a valuation of an MNC that uses multiple currencies. The same process, again, just describing, can be employed to value the MNC that uses many foreign countries. ठीक है, कि आप simply हर करेंसी के अंदर जो उसकी कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस करेंसी के कन्वर्जन रेट के साथ, एक्सचेंज रेट के साथ, तो आपको डॉलर्स की फॉर्म में या रुपीस की फॉर्म के अंदर उसकी वैल्यू पता चल जाएगी. इन सब को ऐड कर देंगे तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू निकल आएगी उसकी.
Now, an important thing, valuation of an MNC cash flows over multiple periods. The entire process described in the example for a single period is not adequate for valuation because most MNCs have multi-period cash flows. However, the process can be easily adjusted to estimate the total dollar cash flows for all future periods. First, apply the same process described as a single period to all future periods in which the MNC will receive cash flow. This will generate an estimate of the total dollar cash flows to be received in every period in the future. Second, discount the established total future dollar cash flows for each period at the weighted cost of capital, and then sum those discounted cash flows to estimate the value of the MNC. सो अगेन यू विल जस्ट सम देम अप. जैसे एक कंपनी के लिए हम कर रहे थे एक पीरियड के लिए, तो अब सब पीरियड्स की उसकी जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे और उसको उसी पीरियड के हिसाब से टाइम पीरियड के हिसाब से हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट कर लेंगे ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू कि हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड. ये जैसे हमने डिवाइड किया 1 + k के ऊपर पावर टी, तो वो उस टाइम पीरियड के लिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जाएगी, उसी को कन्वर्ट करके अपनी करेंसी के अंदर, और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपकी कंपनी की वैल्यू बन जाएगी. उसके सारे फ्यूचर के ऑफ फ्लोज उन सबको क्योंकि टोटल हमने कर लिया है इसके अंदर, तो उसकी वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी. Now, the uncertainty surrounding an MNC's cash flows. The MNC's future cash flows and therefore its valuation are subject to uncertainty because of its exposure not only to domestic economic conditions but also to international economic conditions, political conditions, and exchange rates risk. These factors are explained in the next exhibit 1.4 complements the discussion. Exposure to international economic conditions. To the extent that a foreign country's economic conditions affect the MNC's cash flow, they affect the MNC's valuation as well. The cash inflows that an MNC receives from sales in a foreign country during a given period depends on the demand by that country's consumers for the MNC's products, which in turn is affected by the country's national income in that period. If economic conditions improve in that country, consumers there will may enjoy an increase in their income and the employment rate may rise. In that case, those countries consumers will have more money to spend and their demand for the MNC's products will increase. This illustrates how the MNC's cash flows increases because of its exposure to international economic conditions. However, an MNC can also be adversely affected by its exposure to international economic conditions. If conditions weaken in the foreign country where the MNC does business, that country's consumers suffer a decrease in their income and the employment rate may decline. Then these consumers have less money to spend and their demand for the MNC's products will decline. In this case, the MNC's cash flows are reduced because of its exposure to international economic conditions. You see, when Facebook went public in 2012, the registration statement acknowledged its exposure to international economic conditions. We plan to continue expanding our operations abroad where we have limited operating experience and may be subject to increasing business and economic risks that could affect our financial results. Now you see how the MNC's valuation is exposed to uncertainty and risk. So uncertain foreign currency cash flows due to uncertain foreign economic and political conditions. ये जो cash flows हैं ये again effect हो जाते हैं आपके फॉरेन कंट्री की इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशन से. इकोनॉमिक कंडीशन अप डाउन होगी, अभी ऊपर डिस्कस किया अभी, या आपको पॉलिटिकल सिचुएशन टर्मोइल बन जाता है तो उसकी वजह से आपके कैश फ्लोज इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि लोगों की इनकम उसके ऊपर डिपेंडेंट है और उसके साथ सारे आपके कैश फ्लोज डिपेंडेंट है, जो आपकी बाय कितना कर सकते हैं प्रोडक्ट को. और जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर उसके एक्सचेंज रेट का रिस्क आ जाता है, अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स. Now this is the potential effect of international economic conditions. अगर यूरोपियन इकोनॉमी वीक होती है तो रिड्यूस्ड यूरोपियन डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एट यूरोपियन सब्सिडरीज ऑफ द यूएस फर्म. तो जो यूएस फर्म्स की जो यूरोपियन सब्सिडरीज हैं वहां पर डिमांड कम हो जाएगी, और इसके साथ साथ ही रिड्यूस्ड यूरोपियन डिमांड फॉर यूएस फर्म्स एक्सपोर्ट्स के जो एक्सपोर्ट कर रही हैं उनकी भी डिमांड कम हो जाएगी. एज अ रिजल्ट रिड्यूस सेल्स और कैश फ्लो हो जाएंगे फॉर यूएस फर्म्स.
और इसकी अलावा एक वीक यूएस इकोनॉमी हो जाएगी, इसके अंदर जो वो पंप कर रही होगी, इसको लीड कर रही होगी, क्योंकि खुद भी वहां पर भी एक रिसेशन होगा तो वहां से भी वो कम हो रही है। एज अ रिजल्ट रिड्यूस्ड वैल्यूएशंस ऑफ यूएस फर्म्स हो जाएंगी, क्योंकि वो फ्यूचर बेसिकली तो फर्म की वैल्यू है उसके पोटेंशियल कैश फ्लोज जो फ्यूचर में वो अर्न कर सकती है। जब वो उसकी कैश फ्लो की क्वांटिटी कम हो रही है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यूएशन भी कम हो जाएगी। और वीक यूएस डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एट यूएस फर्म्स, ये इसके साथ एक इसको ना बूस्ट दे देंगे इसी चीज को कि उसकी जो वैल्यू है वो और ज्यादा फर्म की कम हो जाए। Same is the exposure to international political risk. Political risk in any country can affect the level of an MNC's sales. A foreign government may increase taxes or impose barriers on the MNC's subsidiary. Alternatively, consumers in a foreign country may boycott the MNCs if there is friction between the government and their country and the MNC's home country. Political activities like those can reduce the cash flow of an MNC. The term country risk is commonly used to reflect an MNC's exposure to a variety of country conditions, including political actions such as friction within the government policies such as tax rules, and financial conditions within that country. जैसे कि रशिया जो है उसने बैन किए हैं बहुत सारे, 2015 में बैन किए थे दो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जो वो यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट करता था। अब क्योंकि सैंक्शंस लगी हैं यूनाइटेड स्टेट्स की रशिया पे फिर से, तो रशिया ने फिर से बैन की होंगी कई चीजें। तो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग इन दीज कंट्रीज। तो ये पॉलिटिकल रिस्क होता है आपका इस तरह की कंट्रीज में ऑपरेट करने का। बेसिकली आप किसी भी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं तो वहां पर व्हेन एवर देयर बी अ पॉलिटिकल सिचुएशन तो उसका एमएनसी की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। कोई भी, जैसे कि हमारे यहाँ एक इशू हुआ था होली प्रॉफिट के, जो आई थिंक कार्टून बनाए थे, और ये डेनमार्क की जो कंपनी थी उसके अगेंस्ट सारा, यू कैन से लाइक उसके अगेंस्ट ना एक बड़ा वो हुआ था क्रिटिस, व्हाट वर्ड शुड आई यूज, प्रोटेस्ट हुए थे बहुत ज्यादा, और बड़ा खतरा पैदा हो गया था कि उनको आग लगाई जा सकती है, डिस्ट्रॉय की जा सकती है उनकी प्रॉपर्टी। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि दाइवो जैसे कि डेनमार्क की कंपनी थी तब, तो उन्होंने अपनी बसेस छुपाने के लिए डिफरेंट लोगों से बात की कि हमारी बसेस आपके पास हम पार्क कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ थ्रेट है कि कोई भी हमारे स्टेशन पे आग लगा सकता है। तो दैट वाज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी। तो उसकी वजह से उसकी डिमांड भी कम हुई। जब उसकी सेल कम होगी तो उसकी क्योंकि लोग जी डेवो पे नहीं ट्रैवल करना, अगेन रिस्की था, एक तो लोग की जी सिर्फ इस वजह से भी ट्रैवल नहीं करके, एक तो उन्होंने इतना किया तो डेनमार्क का हम बाइकआउट कर रहे हैं, दूसरा इसलिए भी कि कोई भी कभी भी इनकी बसेस को आग लगा सकता है, कोई डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो आप उसमें ट्रैवल करोगे तो आपके लिए भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उनकी रेवेन्यूज बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए, उनके जितने भी डेनिश कंपनीज थी उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तो कईयों ने छोड़ भी दिए अपने ऑपरेशंस, जैसे कि डेवो ने फिर यहाँ पर पाकिस्तान में लोकल उनको सेल आउट कर दिया और खुद चले गए यहाँ से अपने ऑपरेशन पेट के। तो दिस इज अ फैक्ट कि दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग कैन हैपन, और इसकी वजह से कंपनी की वैल्यू भी कम होगी क्योंकि उसके सेल्स वगैरह भी इफेक्ट हो रही हैं। एंड दीज थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। एंड एज यू ऑल नो नेक्स्ट की एक्सपोजर टू एक्सचेंज रेट रिस्क बहुत कॉमन है इन एमएनसीज के। जब भी आपका एक्सचेंज रेट क्योंकि चेंज होता रहता है रेगुलर बेसिस के ऊपर, किसी भी वजह से हो सकता रहा होता है, तो इस वजह से आपके जो वैल्यूएशन है कंपनी की वो डिफरेंट हो सकती है। So if the foreign currency is to be received by a US based MNC suddenly weaken against the dollar, then the MNC will receive a lower amount of dollar cash flows than expected. Therefore, the MNC's cash flows will be reduced. Now, how uncertainty affects MNC's cost of capital. If there is suddenly more uncertainty about an MNC's future cash flows, then investors will expect to receive a higher rate of return. Thus, more uncertainty increases the return on investment required by the investors, and thus the MNC's cost of obtaining capital
which lowers the firm's valuation again, कि cost of capital जब उसकी बढ़ जाएगी तो उसकी जो firm की value है वो कम हो जाएगी. So that's it for today. We'll continue later on.